धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया. I think these lines are surely pertinent and aptly fit the occasion, and I hope our 4 finalists are undoubtedly going to endorse them. It's written in the Bhagavad Gita. Rivers merge in the ocean 24/7, but the ocean remains undisturbed by the flow. Just like our 4 finalists who smash broke all the obstacles that came their way, making their way to the final round today. A very pleasant morning, everyone. This is Siddharth Baluni, and I welcome all of you to the grand finale of the VoW Mantrana National Debating Championship 2022. It's a bright Saturday afternoon, and the fact that it's a weekend today adds on to its beauty because we are relatively free to witness the best of the best today. We are finally here after moving from round to round with more than 150 participants from across the country, and finally the best 4 making way to the final round today. Our finalists today are going to debate upon a topic that not only concerns them or me or the jury alone, but concerns each and everyone, not just sitting here, but across the globe. The topic before the house is, this house believes that climate change is a natural phenomenon and not man-made. यह सदन मानता है कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित नहीं, एक प्राकृतिक घटना है. We have with us Shri Tarun Vijay sir as a chief guest. We welcome you, sir. We have among us Dr. Sanjeev Chopra, Curator, Value of Words, Mrs. Rashmi Chopra, Chairperson, Value of Words, Brigadier K.G. Behel, ex-Deputy Survey General of India, Shri Anil Raturi ji, Shri Devendra Singh Man ji, Dr. Onima Sharma, Founding Director, Mantrana Society, Dr. Vikas Chaubey, Mentor, Mantrana Society, and Mrs. Anjum Sharma. We welcome you all. To assess the 4 finalists on different parameters and make sure that the best one wins today, we have with us a seasoned panel of jury. As our first jury, we have Mrs. Ira Chauhan. Ma'am is an alumna of Miranda House. Ma'am is an Odissi dancer, a disciple of Padma Shri Mayadhar Raut. She is an activist, a trustee of Citizens for Green Dune, a mindfulness practitioner, and a moderator at literature festivals. She has interviewed authors and celebrities, including Namita Gokhale, Shobha De, and Dadi Padmaji, to name a few. Ma'am has contributed to dailies as a columnist, mainly covering cultural and social events and personality profiles and interviews. We welcome you, ma'am. As our second jury member, we have with us Dr. Reena Onyal Tiwari. Ma'am is an Associate Professor, Department of Teacher Education, DAV PGC College, Dehradun. She is awarded with the Teacher of the Year Award 2022, Best Author and Researcher by CTEF India. She has been awarded the Humanitarian Excellence Award by the Icon Foundation, Jaipur. Ma'am has been a resource person in more than 15 faculty development programs and a member in the editorial board in 2 journals of education. We are pleased to have you on board with us, ma'am. As a third jury member, we have Mr. Anjum Sharma. Sir is a teacher, an anchor, a writer, and an editor. He teaches at the Delhi School of Journalism, University of Delhi. Sir has also been associated with the BBC and presents current affairs podcast bulletin Din Bhar There. In the past, he was associated with Aaj Tak, All India Radio, and Doordarshan. His articles have been published in various national dailies. Sir has edited 3 books for higher education. His much-awaited interview series with 100 Hindi authors, Hindui, for Ekta Foundation, is releasing next month in December 2022. He has won 170 national debates when he was in college, including national and parliamentary debates, and has adjudicated more than 50 debates. We are honored to have you, sir. So let me not come between the participants and the excitement that await, so let me acquaint you with the rules of the competition. This round will adhere to the conventional form of debate. The debate shall be in the language chosen during the quarter-final round. Switching language in between is strictly restricted. The speakers shall not disclose their identity. Introduction should contain only their ID numbers and the medium of expression chosen. Wearing any uniform or showing any other symbols which might reveal their or their institution's identity is strictly prohibited. No speaker shall be allowed to carry any supporting gadget during the presentation, violation of which shall result in disqualification. Use of unparliamentary behavior or language during the course of event or violation of any rule will render the participant liable for disqualification. Participants will be given 4 + 1 + 1 + 1 minutes
4 minutes for the content, 3 minutes, 3 rebuttal question, and 1 minute to answer each question. 2 questions from the panel of jury, and 1 question from the opponent. Cross-questioning is not permissible. For every extra 10 seconds taken beyond the stipulated time, there'll be a negative marking of 3 marks. The decision of jury shall be final and binding. The views presented by the participants are personal, neither VoW nor Mantrana endorses them. Rules are subject to change if necessary. फाइनल राउंड के नियम कुछ इस प्रकार है. यह दौर वाद विवाद के पारंपरिक फॉर्म का पालन करेगा. प्रतिभागी को अभिव्यक्ति का माध्यम परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है. द्वितीय चरण में चयन की गई अभिव्यक्ति का माध्यम ही अन्य शेष चरणों में प्रतिभागी के अभिव्यक्ति का माध्यम होगा. प्रतिभागी अपने वक्तव्य के दौरान अपनी पहचान का खुलासा नहीं करेगा. परिचय में केवल आवंटित क्रमांकन संख्या एवं अभिव्यक्ति का माध्यम को बताने की अनुमति है. कोई भी वर्दी या अन्य प्रतीक जो आपके या आपकी संस्थान की पहचान को उजागर करता है को पहनना या प्रयोग करना सख्त वर्जित है. प्रतियोगिता के दौरान असंसदीय, अमर्यादित व्यवहार या भाषा का प्रयोग या किसी नियम का उल्लंघन प्रतिभागी के प्रतियोगिता से निष्कासित होने का कारण बन सकता है. प्रतिभागी को 4 जोड़ 1 मिनट का समय दिया जाएगा. वक्तव्य के लिए 4 मिनट, विरोधी प्रतिभागी द्वारा पूछे गए प्रश्न के खंडन के लिए 1 मिनट एवं किन्हीं 2 निर्णायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए 1 मिनट. प्रत्येक प्रतिभागी अपने प्रतिद्वंदी से एक प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर 1 मिनट के भीतर देना होगा. निर्धारित समय अवधि के बाद लिए गए प्रत्येक 10 सेकंड के अतिरिक्त 3 अंक का ऋणात्मक अंकन होगा. So without any further ado, let me call participant F1 speaking for the motion. Participant F1. I request participant F1 to kindly come forth and present her stance. I'll be starting on the count of 3, 2, 1. Deviations from debates and discussions have become a hallmark of the times that we live in. If I may say so, Honorable Chairperson, let me caution my worthy opponents today who may fail to establish a difference between weather and climate change. So when my worthy opponents come up with the examples of the Delhi fog or the Peshawar's AQI, let me remind them that climate change is a broad phenomenon, dependent upon the geological, socio-ecological, as well as the cosmic phenomenon. And when we say that human beings have created climate change, that means we also say that when human beings were not there, climate change did not exist. Isn't that so? But these examples have something else to say. Shall I talk about the snowball Earth, ladies and gentlemen, where according to which 770 million years back, due to a major volcanic eruption, the sulfur particles reacted with solar radiation, creating a massive cooling effect? Or shall I talk about the Carboniferous forest extinction, according to which 305 million years back, the carbon level in the atmosphere suddenly increased, causing a shift in the kinds of plants, animals, and communities that we saw? What do these have in common? What do these climate variations have in common? They have in common the Earth's chemical composition. They have in common the physical attribution. They have in common, ladies and gentlemen, the geographical phenomenon, geological phenomenon, something more than the mere human interference. And therefore, my first argument stands, Honorable Chairperson, that climate change is not only dependent upon the Earth's atmosphere, but it's dependent on the entire solar system. According to a research by Seventhman, the sun is getting brighter day by day. A 10-factor increase impacting the Earth's atmosphere. If you don't believe me, let me give the example of Vikings. 300 years back, when the sun was not very active, the entire Viking was covered in the Ice Age. But 1,000 years back, when the sun was active, the Vikings were blooming with green land, proving that how the climate changes in accordance with the sun's brightness. Secondly, he also proved that how the formation of cloud is dependent upon the solar system, because the cosmic rays which are responsible for the formation of clouds is very easily trapped by sun and other planets who have an ever-increasing magnetic field, proving that how the solar system impacts the climate change, ladies and gentlemen. Second argument, how the geographical and ecological factors have a role to play. The same carbon dioxide which dries up the Amazon brings about more rain in Malaysia and Indonesia. Why is that so? Because of the difference in the physiological responses in all these regions, because the latter has more ocean, leading to more moisture retention.
proving that it's not only pollutants in the environment leading to climate change, but rather it's nature's response to those pollutants that is leading to the climate change. Last and most importantly, Honorable Chairperson, when we say that human beings have created climate change, let's not forget that human beings themselves are a puppet of nature. According to Chantal Van and so many other intellectuals, the resource exploitation that human beings have done have been in the response of the environmental determinant, have been in the response of the environmental stress. And that is when I give the example of the Neolithic Revolution, where how in response to the climatic volatility, human beings wanted to get more stable. In order to gain that stability, they started doing agriculture by the deployment of the sophistication of technology. And when they got more stable, the places where they got more stable, the population density increased. So when we blame the population, the technology, the agriculture as the major reasons behind the climate change, let's also understand that they were majorly propelled by the climate change itself. In conclusion, I would like to say, the climate change, ladies and gentlemen, is like a jigsaw puzzle where one piece impacts the other. And therefore, it's imperative that we put these pieces together and understand the clear picture. Because wind, ladies and gentlemen, it's not only confined to the Earth's atmosphere. Wind goes to the north, turns around the south, wind whirls around continually, and comes back to the origin. Thank you very much. I rest my case. Well, thank you, participant F1. The House is open for rebuttal. I ask the opponent to kindly ask a question to F1. Thank you, ma'am. Great speech, but my question is simply based on irrefutable facts and not opinions. So, ma'am, we know that carbon dioxide has increased by 40% ever since the dawn of the Industrial Revolution. Moreover, there's a lot of methane in the air right now than it was in the last 800,000 years. And if this is not enough, then let me also tell you that North Pole and South Pole are increasingly warming, and the ice in the Arctic Sea is melting, and glaciers are retreating all over the mountains. So in light of the aforementioned facts, which I again say are irrefutable, don't you think you are just turning a blind eye to these scientifically proven facts and continuing with your stance? Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for that question. It will further help me elaborate upon some of the aspects that I may have missed in my debate. To answer that, I would like to give the example of New York. 100 years back, it was completely covered in ice. But this time around, it has a really high temperature. Scientists try to test the glaciers found in the New York, and when they tested that, the carbon found in those glaciers was still 800,000 years back, which indicates that there are still phenomena like Milankovitch cycle responsible for the climate change. So definitely, human beings have contributed to climate change. There's no denying that. But compared to what has been done naturally, the human contribution to climate change has been minimal. If you see the example that the carbons, mostly when we talk about the uniform climate change that has happened, it has been done naturally. But when we see the example of just 35 years time period, 30 years time period, it may seem like 1 degree, 2 degree increase is a major increase. But when we really see the entire picture, where the entire climate has been changed of a particular place due to events that has happened that has been natural in nature, we'll see that how nature has been responsible for the most of the phenomenon that has happened. I really hope it answers your question, ma'am. Thank you. Thank you, participant. May I now request one of the jury members to kindly ask a question to participant F1. Okay, you have presented your views in a very thoughtful and a very forceful way, I can say. Thank you, ma'am. Especially I want to ask, when we are talking about the resource exploitation, and you are saying that it is a natural phenomenon, more of a natural phenomena. But we can easily see that the resource exploitation has been maximized due to human interference only. So what is your take on that? Yes, ma'am. For that, I would like to give the example of fossil fuels. For example, when fossils got deposited in nature, which was during the Devonian period, it had the non-uniform deposition in each and every places. It mostly was there in Saudi Arabia or the US or so many other countries, which is why we see the difference between the developed and developing nation. That is our major argument, that developed nations are responsible for the climate change, etc. And the resource exploitation has been maximized. I agree that resource exploitation has been maximized, but humans still are at the adaptation and mitigation end, are at amplification end, but surely not at the creation end. Because the creation, you see, the fossil even was
natural in nature. It naturally got deposited, but when the environmental stress, as we see as the concept of human evolution, was brought along, then the human beings had to adapt to the nature's dictates, because that is completely a part of natural evolution. Even when we talk about animals, ma'am, even they change the breeding stages, even they change the migration, even they change a lot of phenomenon. So this concept of the exploitation of resources is not only exclusive to human beings. Species do that, animals do that, everybody is doing that for their natural sustenance. I really hope it answers your question, ma'am. Thank you. Thank you, participant. Do we have any other questions from the jury? One last question. Taking off from where you ended, what about permafrost, the thawing of the permafrost? You've been talking about how species adapt. In this case, it's happening at such an alarming rate and at such great speed that the species don't have the time to adapt to it. What is your take on that? Yes, ma'am. For that, I would like to answer, for example, the snowball earth or the carboniferous rainforest extinction that I talked about. Even that was a major phenomenon that gave rise to the multicellular organism as well as the extinction of the dinosaurs. So it's not only in this age when human beings are responsible for the extinction of species, even it naturally happened in the age when human beings were not even there. For example, if we talk about ocean, Honorable Chairperson, ocean already had a lot of carbon dioxide. So ocean was created in a way that it already could absorb a lot of carbon dioxide. Human beings are still at the amplification stage. Even if human interference had not been there, ocean would still emit a lot of carbon dioxide in the atmosphere. So nature is at the creation stage when we talk about climate change. Human beings surely are at the amplification stage, not at the creation stage. And it's still, I would like to say, that nature's response to react to it. So the responsibility, as the motion says, lies with the nature. I really hope it answers your question, ma'am. Thank you so much. One for her content presentation is 3 minutes 57 seconds. Thank you, participant F1. May I now request participant F2 kindly come forth and present her stance. Participant F2. Honorable Chair, kindly note this is participant F2 and I will be presenting my stance in English. Please start my timer on the count of 3, 2, 1. Amazon forests on fire. Heat waves in Europe. People drowning on the subway in China, devastating floods in Bangalore, cloudburst in Kedarnath. Who is responsible behind this catastrophe? 3 letters, 1 word, man. Ladies and gentlemen, today we must very responsibly consider what we would be debating over, since the consequences of climate change are not local. They are global. It is affecting all of us, and in the next few minutes, I aim to prove what my opponents say is a natural phenomena, is rather man's own making. Ladies and gentlemen, let's start by pinpointing the date when human-induced climate change started, so that we can understand when the warning trend broke through the boundaries and resulted into a disaster that we are witnessing today, right here, right now. Ladies and gentlemen, a very subtle point to note here is that the average temperature increased from minus 0.4 degrees Celsius to 0.6 degrees Celsius between the years 1851 to 1935. Ever wondered as to what must have happened during this period? It was the event that propelled mankind's growth. It was when the great industrial revolution had happened. Ladies and gentlemen, in yet another warning for the future of our planet, a report released by the World Meteorological Department clearly mentioned that the 3 main greenhouse gases, which comprises of nitrous oxide, methane, and carbon dioxide, have reached record new level of high in the year 2021. Honorable Chair, do I need to remind you how these gases are a byproduct of each and every activity undertaken by the society at large, comprising of 7.9 billion people? Moreover, ladies and gentlemen, climate change isn't something that humans get to choose to believe or not. It is happening, and it is being accelerated by humans themselves, since today we have increasingly contributed to the concentration of these gases in the environment, and apart from that, we have also contributed to other drivers of climate change, and yet my opponents have the audacity to say that climate change is a natural phenomenon. Ladies and gentlemen, over the past 40 years, 2 very significant events happened. The first being that human society grew at an insane speed. From developments in the field of communication to space to medicine, we have witnessed it all.
But the second major event that happened has been the considerable warming of our planet, which, mind you, has also happened in the last 40 years. Ladies and gentlemen, 90% of this heat directly goes into our oceans, and be it my question to the audience here is, do you really think the Earth would just do this on its own? Aren't the signs way too obvious? Indeed, ladies and gentlemen, they are. And with the advent of globalization, it is a matter of pride when we say that India's GDP is higher than GDP of countries like UK and US. But have we ever wondered what this GDP is coming at the cost of? Be it the mega factories in the People's Republic of China or the futuristic Japanese technology, each and every technological advancement, ladies and gentlemen, is costing us, our planet, one step at a time, leading to what we all know as climate change. In conclusion, Honorable Chair, let's conclude with the very, very wise words of Sir David Attenborough, who said, "There is no question that climate change is happening. The only arguable point is what role humans are playing in it." And Honorable Chair, today the debate shouldn't be about whether the climate change is a natural phenomena or a man-made one. Rather, the debate should be about what we as a society can do about it. Very, very proud to conclude. Thank you so much. Respected jury, kindly note, time taken by participant F2 for her content presentation is 3 minutes 49 seconds. Thank you, participant F2. I now open the house for rebuttal. Do we have any question from the opponent participant? It was a great speech, ma'am. However, you emphasized a lot on the human interference when you talk about the climate. You talked about the temperature increase, the global warming and everything that we see. But can you give me one example? For example, when we talk about the ice age, where uniformly the climate of the entire place changed. So when you're talking about global warming and temperature increase, can you give me one example where the climate of the entire country changed? I'm talking about climate and not weather. The climate entirely changed, making it difficult for the people there to live inside it. Thank you so much, ma'am, for your question. So let's consider the example of the European heatwave crisis that has happened in 2022 and that led the whole continent into a frenzy. Ma'am, 15,000 people have died in Europe because of what? A heat wave. Moreover, ladies and gentlemen, in light of the Russian-Ukraine war, European countries have currently kept their green transition plans on hold, and they're now opting for dirtier fuels like coal to run their economies and run their businesses. Ma'am, this is a very clear-cut example as to what can happen to an entire continent when humans have a major effect on the environment because of which all of the heat is trapped and it leads to millions and millions of deaths. Ma'am, in another report which was released by European Commission, it was clearly mentioned if Europe continues its human activities at the rate which it is right now, Europe might as well witness more and more droughts, more and more agricultural losses, more and more water scarcity in the near future as well. And if this example doesn't serve as a major warning for us, then I don't know what else will. Thank you so much. Well, thank you, participant. May I now request one of the jury members to kindly ask a question to participant F2. You said that it all depends on science, right? When you say science itself do it, my question is, don't you think you are rebutting your own arguments by saying science itself do it, because science itself depends on the logic which nature has provided to us? Sir, science absolutely depends on logic. However, I'll take a very contemporary example to make the audience understand what is at stake. Please have a look at the glass of water which is there on the table right now. Sir, this serves a very rudimentary purpose in our daily lives. But when things like these, ladies and gentlemen, they are mass-produced, they make us, the earth, a less livable than what it already is. Not only for me, not only for sir, but for the audience at large, ladies and gentlemen. Moreover, sir, there was an IPCC 6th assessment report which was prepared by 234 scientists from 66 countries all across the globe, which clearly mentioned that if humans continue to cause damage to the environment at the current rate which they are, regardless of the scientific facts that are there, we might as witness another Kedarnath or another Bangalore flood or another European heatwave crisis in some other country. So we need to understand that there is no upper limit as to how worse things can get. If human action is the problem, then ladies and gentlemen, human action is also the solution. Thank you so much. Do we have any other questions from the jury?
Okay, we're going to make it an interactive session. Do we have any questions from the audience, please? Any question from the audience? We'll provide you a mic, sir. Just a minute. I've heard the arguments from both sides. So where do we go from here? Do we not take some action? Or do we just sit still and watch what nature is doing or what we are doing? So as the highest creation in nature, and regarding nature even as an illusion, a maya jal, what do we do from here? Do we do something positive, something for the the generation which is yet to be born? Right. Thank you so much, sir, for the great question. Ladies and gentlemen, a debate is always between two things: how things are and how things ought to be. So, ladies and gentlemen, we need to take some action. The first being, we need to focus more and more on climate budgeting and climate financing. The second, sir, we need to make sure that we make newer pacts between richer countries and poor nations. So, there is an equal responsibility, or what we all know as shared responsibility between the nations. So, the two major economies of the world, US and China, used to have pacts earlier wherein they used to work together to combat issues like climate change. So that is one thing that these countries need to take care of, apart from obviously increasing their GDP. Another thing is, sir, we need to make sure that we provide renewable access to renewable and clean energy to all nations that are out there, because like I said, sir, the solutions is what matters the most. Today the debate should be about the solutions, what we as a human society can do about it. And just to conclude, ladies and gentlemen, I am leaving something with the audience to think about. Today humanity has a choice, either to cooperate or to perish. Either it is a global solidarity climate pact, or it's a global suicide pact. You get to decide which choice to make. Thank you so much, ladies and gentlemen. I am very proud to conclude. Thank you, participant F2. अब मैं प्रतिभागी संख्या F3 से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें. प्रतिभागी संख्या F3. प्रणाम। 26 जुलाई 2016 प्रकृति के विनाश के लिए खुद जिम्मेदार इंसान। 24 नवंबर 2019 प्रकृति और मनुष्य के बीच जंग जारी। आखिर कब समझेगा मनुष्य? 17 अक्टूबर 2021 क्या ह्यूमन एक्सटिंक्शन ही है ग्लोबल वार्मिंग का समाधान? ये महज समाचार पत्रों के हेडलाइंस नहीं है, बल्कि इस बात के परिचायक हैं कि किस तरह हमने जलवायु परिवर्तन और प्रकृति को एक ही धुरी पर घुमाना शुरू कर दिया है, कि किस तरह जलवायु परिवर्तन और प्रकृति को लेकर हमारे एक ही समाधान है, ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन इंटरफेरेंस, और हम इसी की ओर अपनी सुई केंद्रित कर देते हैं। तो यदि आज मैं आपसे कहूं कि जलवायु परिवर्तन के लिए मानव जिम्मेदार नहीं है, प्रकृति जिम्मेदार है, तो शायद आप अपनी परिकल्पना से बाहर निकलकर मेरी इस बात को मानने में संकोच करेंगे। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 3 मिनट में आप इस स्टीरियोटाइप से बाहर निकलकर इस बात पर विचार विमर्श करने की ओर अग्रसर होंगे। महोदय, जलवायु परिवर्तन को प्राकृतिक या मानवीय की श्रेणी में डालने से पहले इस तथ्य को जानना अत्यंत आवश्यक है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ही जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है, जिस पर आधारित चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर ने अपनी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। महोदय, मैं जिस धरती पर खड़ी हूँ, देवभूमि उत्तराखंड, सॉरी फॉर द माइक हैज, देवभूमि उत्तराखंड की जिस धरती पर खड़ी हूँ, यहाँ पर आंदोलनों की शुरुआत हुई है, पेड़ लगाने से लेकर पेड़ बचाने तक की। तो सर्वप्रथम मैं उन मानवों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, जैसे गौरा देवी और उन समस्त सिपाहियों को जिन्होंने अपना जीवन जलवायु संरक्षण के लिए न्यौछावर कर दिया। पौधों को परमात्मा मानने का भाव रखने वाला मानव, वह मानव जिसने प्रकृति पूजा को मानवता का अभिन्न अंग माना है। मानव, I'm really sorry, I'm a little nervous. I'll end my speech here. I'm really sorry I'm very nervous. Yes, I'll start my speech on the count.
यदि अभी मेरे तर्कों से विपक्ष पूरी तरह से अगर अभी मेरे तर्क विपक्ष को बहुत ही बेबुनियाद लग रहे हैं तो मैं कुछ साइंटिफिक टर्म्स को आपके सामने गिनाना चाहूंगी। पहला, वर्ष 540 ईस्वी में, वर्ष 540 ईस्वी की बात है जब एल साल्वाडोर में एलोपेक ज्वालामुखी इतनी हिंसक रूप से, आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, आई एम रियली वेरी नर्वस राइट नाउ। धन्यवाद प्रतिभागी संख्या F3। आदरणीय निर्णायक मंडल, प्रतिभागी संख्या F3 द्वारा लिया गया समय है 2 मिनट 45 सेकंड। Sir, I'll try my best in the rebuttal round. Since I've not prepared my speech, I didn't get enough time. I was there in a tour. So, I'll try my best to, present myself in the rebuttal round. अब मैं प्रतिभागी संख्या F4 से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना प्रश्न पूछें। हम देखते हैं कि कितनी प्रजातियां आजकल पतन की ओर जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मानव के कृत्यों के कारण ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है? इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूँगी कि जब धरती पे जीवन का जन्म हुआ था तब सबसे पहला जीव जो आया था, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम जिसे कहते हैं, वो जब उसने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरना शुरू किया था और फिर उसके बाद वो विलुप्त हो गया। और आयरॉनिकली इसका कारण ये था कि ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से उसकी विलुप्ति हो गई। ना इसमें कहीं से कोई ह्यूमन इंटरवेंशन था, ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रही, ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था। उसने जिस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में भरा उसी के कारण वो विलुप्त हो गया। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। धन्यवाद प्रतिभागी F3। अब मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना प्रश्न पूछें। आपने कहा कि जलवायु परिवर्तन जो है वो मानव निर्मित नहीं है बल्कि प्राकृतिक है। मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि इसे एक प्राकृतिक ही केवल मानकर हम जो मानव हैं, जो सबसे इंटेलेक्चुअल स्पेशीज है, क्या हम केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं कि अपने आप प्रकृति जो कर रही है उसे करने दिया जाए? मैम, आपका क्वेश्चन और ये जो विषय है ये दोनों दो डोमेन की बातें हैं। पहले तो मैं विषय को इलैबोरेट करना चाहूँगी कि विषय ये पूछ रहा है पूरी तरह से कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। तो बिल्कुल वो प्राकृतिक है। और जहाँ से जिस डोमेन से आपका क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर ये है कि मानव प्राकृतिक होने के साथ साथ मानव ने इसे गति दी है। इसके लिए ये एक अलग विषय है, ये इस डोमेन का क्वेश्चन ही नहीं है। देर आर वेरी, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लेके चल सकती हैं, जैसे मिलान को विद साइकिल वगैरह है, जहाँ पे सोलर, नॉट जस्ट दी अर्थ, सोलर सिस्टम पूरी तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ह्यूमन ने इसको एक स्पीड दी है, दैट इज अनदर डिबेट, बट यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के बाद भी नेचुरल डोमेन्स की वजह से द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। आई होप आपने UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल, हाँ जी मॉन्ट्रियल सर। और पेरिस एग्रीमेंट और अभी जो इस समय चल रहा है उसके बारे में पढ़ा होगा। इन इजिप्ट। इजिप्ट, यस। अगर मानव निर्मित नहीं है और प्राकृतिक है तो जाहिर सी बात है हमें इन प्रोटोकॉल्स की, इन एग्रीमेंट्स की, इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, है ना। आपको करना भी कुछ नहीं चाहिए। इन प्रोटोकॉल्स को लीगली बाइंडिंग कराने के लिए फिर हम इतने ज़्यादा आतुर क्यों हैं अगर ये मानव निर्मित नहीं है तो? सर, असल में हम जो एक्शन ले रहे हैं थोड़ी सी कमी उसमें है। हम अब आज भी यहाँ पे इस विषय पे जो बात कर रहे हैं उसमें हम कारणों पे बात कर रहे हैं, निवारणों की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें सबसे सर्वप्रथम तो कारणों के साथ निवारणों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है, ना कि विवाद करने की जरूरत है। एंड आई थिंक ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें एक्शन टेकिंग जो ह्यूमंस हैं, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ना कि एक नेगेटिव वे में उसको विवाद करके उस पर एक अलग डोमेन में से ले जाना चाहिए। एंड सिंस आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई स्पीच, आई रिक्वेस्ट कि अगर कोई भी और क्वेश्चन हो, सिंस आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई स्पीच एंड आई रियली वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, और थोड़ा सा मीडियम का भी इशू है, इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस। We are going to stringently follow the rules of the competition. There are only 3 battles allowed. Okay. Thank you so much. Thank you participant so much, F3. and I'm really sorry अब मैं अनुरोध करूंगा प्रतिभागी संख्या F4 से कि वे कृपया मंच पर आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। कितना और कब तक अपनी गलतियों पर इनकार लिखोगे? कभी तो खुद को गुनहगार लिखोगे। सर्वेभ्य नमो नमः। मेरा मानना है कि मेरा विपक्ष और ये सदन का मत एकदम सही है अगर आंखें मूंद कर एक काल्पनिक कहानी की बात की जाए।
माना कि जो पंच महाभौतिक तत्व होते हैं उनका आधार केवल प्राकृतिक होता है, परंतु कृमित कारणों का क्या? जिसका आरंभ लिखा हो उसका अंत लिखा होता है, परंतु शनै शनै। यूं कहा जाए कि मनुष्य द्वारा किए कार्यों का प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये वही बात होगी कि किसी रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक द्वारा किया कार्य कर्म ही ना हो। ये हमें समझना होगा कि जो भी हमारे हस्तक्षेप पृथ्वी के साथ और उसके क्रिया चक्रों के साथ होते हैं, उसका कहीं ना कहीं संतुलन में प्रभाव पड़ता है। मुझे याद है कक्षा 7वीं में जब मैंने जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, ना केवल मुझे, मेरी पूरी कक्षा के मन में एक चित्र उभरा था कि आधी धरती मुस्कुराती थी क्योंकि वहां प्रकृति बसती थी, और आधी उदासीन थी क्योंकि वहां मनुष्य की रची दुनिया रहती थी। हरे और नीले रंगों के छाप से हमने पृथ्वी का चित्रण कर दिया और उसे आधार जीवन का बताया, पर जिसने जीवन दिया हमने उसी की मृत्यु को लिख दिया। कि आज भी मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ कि तापमान का बढ़ना हो, वर्षा का गिरना, वर्षा का बदलाव, बदलते पैटर्न्स हो, या कि समुद्रों का अम्लीकरण हो, या कितनी ही जनजातियों का पतन हो, परंतु मैं आज वो कहूंगी जो आज हम देखते हैं कि ना जाने कितने ही, कि जिस नवंबर में चलती थी अंगीठियां कभी, आज कितने प्रांतों में तपती दोपहरी है। जहां बरसते थे बादल बेबाक, आज वहां की धरती भी प्यासी है। बताइए कितने रंग के पॉलीथीन देखे। अब प्रदूषण की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हर 2 हाथों को अपनी एक कार चाहिए। आज भी मेरे बागों में आम आते हैं, पर मेरे मुंडेरे पर अब कोई कोयल नहीं गाती। और बड़े अदब से लिखा था, पहली बरसात को इश्क उसने, जिसे तेजाब अब इश्क इमारत है बताती। ये सब कहने का सिर्फ एक मकसद है कि कितनी ही जनजातियां आज हमारे कारण पतन के रास्ते पर हैं, और ना सिर्फ जनजातियां जो हमारी आंखों को भाते हैं, हमारे जैसे ताजमहल, ये भी खतरे के निशान पर हैं। ये भी खतरे के निशान पर हैं। रूबिकोला प्रथम स्तनधारी जिसका पतन का कारण रहा पर्यावरण डिस्टर्बेंस, और सबसे ज्यादा पर्यावरण डिस्टर्बेंस। अब डायनासोर्स के अंत का कारण तो पर्यावरण रहा, परंतु इन जनजातियों का क्या? मेरे शब्द कटाक्ष होंगे, जहर होंगे और आप पर इल्जाम होंगे, पर बदकिस्मती से सच है कि मेरा मत केवल 2020 का चित्रण है। हम दरवाजों में बंद क्या हुए कि ऊंची इमारतों में भी तारे दिखे थे, ना जाने कितने सारे पशु जो ना दिखे वो भी उस रोज हमें आकर दिखे थे, और दिखे थे पहाड़ भी बहुत प्यारे मैदानों से दिखे थे। और ये बात सिर्फ किसी इमोजी के साथ सोशल मीडिया तक नहीं, कि सिर्फ किसी इमोजी के साथ सोशल मीडिया तक नहीं, हमारे जहन में जानी चाहिए थी, और हमें कितने मोड़ों पर कितनों का कर्ज चुकाना है, हमें किस गुनाह का क्या मोल बताना है। और ये मैं खोती कौन हूँ आप सब पे इल्जाम लगाने वाले? जितने गुनहगार हैं आप, उतनी गुनहगार हूँ मैं। धन्यवाद। निर्णायक मंडल, प्रतिभागी संख्या F4 द्वारा लिया गया समय है 4 मिनट। धन्यवाद प्रतिभागी F4। अब मैं प्रतिद्वंदी प्रतिभागी F3 से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना प्रश्न पूछे। आप चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी से भली भांति परिचित होंगी, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि इन दोनों थ्योरीज को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आपको कैसे आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि ह्यूमन इंटरवेंशन है? अगर हम देखें किसी भी एक थ्योरी में जिस समय पे दी जाती है, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स और प्रभाव साथ में आते हैं, और अगर कुछ जो प्रकृति है वो संतुलित है, पर अगर हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे उसका संतुलन हमेशा ही बिगड़ता है, और मनुष्य वो कारण बना है जिसने उसके संतुलन को बिगाड़ा है। इसलिए मैं मानती हूँ कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की भी एक थ्योरी डार्विन ने दी है। वहाँ पर भी हम एक 1920 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर देखते हैं, वहाँ पर भी म्यूटेशंस आती हैं बहुत सारी स्पीसीज में, तो वो भी ह्यूमन के कारण है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज के कारण वो म्यूटेशन क्रिएट हुई थी।
धन्यवाद प्रतिभागी। अब मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना प्रश्न पूछें। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हाँ जी। है ना? अगर आप कहते हैं ये मानव निर्मित है, तो उसके भी दो पहलू हैं। दूसरा पहलू ये है जो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मानव निर्मित नहीं है, उसके फायदे और नुकसान भी होते हैं। अगर मानव निर्मित है जो आप कह रही हैं और नेचुरल फिनोमेना नहीं है, आपको लगता है इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं? ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती थी, अगर वहाँ बारिश हो रही है तो ये मानव के पक्ष में है, अगर मानव निर्मित है तो उसके फायदे हैं और वो सही है? सर, ये हाँ या ना वाला सवाल ही नहीं है कि कहीं पे हाँ ये फायदा भी हो सकता है, कहीं पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ बारिश हो रही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है। कि अगर हम भारत की ही बात करें, कितने प्रांतों में, जैसे पंजाब, वहाँ पर बारिश पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम होने लगी है। अगर हम आज का ही मौसम देखें, नवंबर का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर इस टाइम पे ठंड होनी चाहिए थी, पर अगर हम यहाँ पर देखें तो धूप निकली हुई है। ये सब, और इसके साथ अगर यहाँ पर मौसम में इतना परिवर्तन है, तो जो हमारी वेजिटेशन होती है, हमारी सब्जियाँ होती हैं, वो हमारे उस मौसम के हिसाब से सही होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की हेल्थ पर बहुत फर्क डालती हैं। धन्यवाद प्रतिभागी संख्या F4। एक क्वेश्चन मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कोई प्रश्न जी। धन्यवाद महोदया। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल सा है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन से एक बार को कंसिडर करें कि ह्यूमंस को एलिमिनेट कर देते हैं, मानव है ही नहीं, तब क्या आप बोलेंगे कि जलवायु परिवर्तन रुक जाएगा या वो तब भी चलेगा? धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन, मैंने अपनी पहले ही लाइन में कहा था कि जो पंच महाभौतिक है उसका कहीं ना कहीं प्रकृति से लेना देना है, परंतु आजकल मानव एक बड़ा कारण बना हुआ है। अब अगर हम अपने ही शरीर की बात लें तो उसमें से भी मल निकलता है। ये मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि जहाँ पर जिंदगी है वहाँ कुछ ना कुछ अनचाहा भी होगा। हमें ज़रूरत और शोषण के बीच में एक अंतर पता होना चाहिए। ज़रूरत से हम कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर हम क्या कर रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं प्रकृति का। अपने लिए हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं और कल यही प्रकृति हमारा नाश करेगी, क्योंकि 4 बिलियन साल हमने प्रकृति की अब उम्र लिख दी है, जो कि अगर सूर्य के गर्म होने के, जैसे F1 ने बोला था कि सूर्य इतना गर्म हो रहा है, तो वो 1 मिलेनियम होता है उसका समय, पर हमने 4 अरब वर्ष लिख दी है। तो मैं ये डर होना चाहिए हमारे बीच में कि अगर हम पृथ्वी को नुकसान करेंगे तो पृथ्वी हमें मार देगी। थैंक यू सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो We'll just have 3 rebuttals for the round. We'll strictly comply to the rules and regulations. आपने कहा था कि जितने गुनहगार आप हैं उतने गुनहगार मैं भी हूँ। सर माइक। जितने गुनहगार आप हैं, हाँ जी, उतनी गुनहगार मैं भी हूँ। मैं इस परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। जो कुछ हमारे हिमालयाज में हो रहा है, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और आप जानती हैं उत्तराखंड में भी, और अभी भी एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का वो इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए हिमालयन ग्लेशियर्स को, हिमालयाज को बचाने के लिए? क्योंकि मैं हिमालय से हूँ। मैं ये जानना सर, जो चाहता हूँ। मैंने लास्ट लाइन बोली, जितने गुनहगार हम हैं और उतने मैं भी, क्योंकि आप भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। और आपने मेरे से पूछा हमें क्या करना चाहिए, मैंने अपने पिछले ही उसमें आंसर में बोला है, अपने उत्तर में बोला है कि हमें शोषण और ज़रूरत के बीच का अंतर पता होना चाहिए। अगर हम शोषण करेंगे तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो चीज़ों को नुकसान देगा, क्षति करेगा, परंतु हम अगर ज़रूरत के लेकर चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो संतुलन बना रहेगा, क्योंकि पृथ्वी ने अगर हर किसी जनजाति को बनाया है तो वो कहीं ना कहीं उसने सोच के बनाया होगा, और हम भी प्रकृति की ही देन है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभागी संख्या F4। Swami Vivekananda said, "True guidance is like a small torch in a dark forest.
It doesn't show everything once, but gives enough light for the next step to be safe. And I think we have the right people to guide us today. May I now request our chief guest, Shri Tarun Vijay sir, to kindly address the gathering. प्रिय संजीव जी, मान साहब, बहल साहब, हैंकी साहब और डोभाल जी, मित्रों, मैं तो इनके विचारों के प्रभाव में बह गया था और इतना सुंदर, इतना अच्छा इन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया है कि जिसके लिए मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब अच्छी तैयारी करके आए और एक बच्ची बेटी है हमारी, वो थोड़ा सा नर्वस होगी। तो मैं जब कक्षा 3 में था और गांधी स्कूल में मैं यहाँ पढ़ा हूँ देहरादून में, तो वहाँ हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा जब तुम उस समय वाद विवाद प्रतियोगिता कहते थे इसे, तो जब बोलने के लिए जाओ तो हमेशा ध्यान में ये मन में रखो कि जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वो तुमसे ज़्यादा नहीं जानते। तो उस विश्वास के साथ बोलो कि तुम उन्हें कुछ बता रही हो। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अब यमुना के विषय में हम एक दोहा पढ़ते थे, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इतनी सुंदर यमुना, इतनी सुंदर यमुना जिसके तट पर तमाल के वृक्ष इतने घने हैं कि उस वनों को देखकर लगता था कि एक मध्य में कोई स्वर्गीय आभा आलोकित होकर बही जा रही है। अब जब हम यमुना यहाँ उत्तराखंड में देखते हैं, तो मेरा बेटा साथ में था, तो मैंने कहा कि देखो ये यमुना कितनी सुंदर है। कहती यमुना कैसे हो सकती है? हमने कहा क्यों? कहती ये तो गंदी नहीं है, ये तो बहुत साफ है। अब यमुना का परिचय हमारे मानस में ऐसा बैठ गया है कि जो हम दिल्ली में देखते हैं कि जिसमें झाग है, जिसमें केमिकल्स हैं, जिसमें जो जल आप हाथ में नहीं ले सकते हैं, वो किसने किया? वो यमुना ने स्वयं नहीं किया, वो किसी और ने किया जिसमें हम लोग मनुष्यों को मानते हैं। प्रकृति को पूरी जिम्मेदारी देकर मनुष्य अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। ये वैसा ही है कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई और बनाई तो मनुष्यों को भी उन्होंने जन्म दिया। अब मनुष्य जब हो गए हैं तो पुरुषार्थ का एक रोल होता है, और यह जो डिबेट है यह पुरुषार्थ और प्रकृति के मध्य की का जो द्वंद्व है उसी का एक प्रतिफल है। सत्य जो है एकांगी नहीं हो सकता, सत्य के अनेक रूप होते हैं, और इसलिए ये सत्य है कि प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, परंतु उन परिवर्तनों को मनुष्य ने एक नकारात्मक रूप से दिशा दी, गति दी, जिसके लिए हम अपना दोष तो हमें मानना ही चाहिए। अगर हम अपना दोष नहीं मानेंगे तो हम इस पृथ्वी के विनाश को और तीव्रता से ले जाएंगे। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं समझता था कि हम भारतवर्ष में हैं तो डार्विन के अलावा भी हम किसी को उद्धृत करेंगे, और अकेला डार्विन या जो आपका प्रोटोकॉल्स हैं वही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ वर्ष पहले जब पर्यावरण का एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ, तो उन्हें वहाँ अपने मुख्यालय में पर्यावरण रक्षा के लिए कुछ उद्धरण चाहिए था। वह उद्धरण यहाँ से डॉक्टर करण सिंह लेके गए थे, जो ऋग्वेद का उद्धरण था। हम पृथ्वी पर उस प्रजाति से हैं, उस वर्ग से हैं जिसने पृथ्वी को माता कहा है, और ऋग्वेद में वृक्षों के संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए जो बातें कही गई हैं, उनके कारण भारत में फिर भी प्रकृति का विनाश वैसा नहीं हुआ जो अन्य देशों में हुआ। तो उसको भी हमें अपने पढ़कर आना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही गई है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि यह डिबेट हमको बहुत पॉजिटिव दिशा में लेके जाएगी। पर मनुष्यों की भूमिका को उसी प्रकार से हम नकार नहीं सकते जैसे हम कहें कि अगर अणुबम बना है तो इसमें हमारा क्या दोष है, क्योंकि अणुबम जिन अवयवों से बना है, जिन तत्वों से बना है, जिस पद्धति से बना है, वे तो सब ईश्वर ने ही दिए हुए थे। सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ था यहाँ पे।
और उसको हमने एक विभिन्न रूप में समायोजित कर दिया, तो अणुबम के लिए मनुष्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अणुबम के लिए भी प्रकृति ही दोषी है। तो मैं समझता हूँ यह नहीं उचित है। जो प्रकृति को इस जलवायु परिवर्तन के लिए पूर्णतः उसके ऊपर दायित्व डाल रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए, लेकिन जो हमारी मनुष्य जाति है उसका भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम पर्यावरण रक्षा के लिए हर विद्यालय में, हर संस्थान में जागृति पैदा नहीं करेंगे, तो पृथ्वी का विनाश और भी निकट से निकटतर आता जाएगा। इस विचार प्रवाह के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Well, thank you so much, sir. That was really insightful. In the queue, may I now request Dr. Reena Tiwari Niyal to kindly address the gathering. A very warm namaskar to the organizers, the chief guest, audience, the students, my fellow jury members, as well as the participants. आज इस वैली ऑफ वर्ड्स के लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे लगता है यंग माइंड्स के अपने विचारों को प्रस्तुत करने से बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। और यहाँ हम सबके लिए ये भी जानना आवश्यक है कि ये फाइनल राउंड था, 4th राउंड। इसका मतलब जो प्रतिभागी अपने विचारों को सबसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाए पहले 3 राउंड में, वो लोग इस मंच तक पहुँचे हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए इस विषय को लेकर। भाषण प्रतियोगिता हो या वाद विवाद प्रतियोगिता हो, जब आपके सम्मुख आपको ऐसा लगता है कि बहुत जानकार से लोग बैठे हुए हैं, तो घबराना लाजिमी है। और कुछ विद्यार्थी जो थोड़ा रुक गए, नहीं बोल पाए, उसमें उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटा सा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, वेन एवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ डिबेट, तो तथ्यों के साथ प्रमाण को जब आप रखते हैं तो आपकी बात जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और वो उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। कई बार हम कुछ कविताएं या कुछ कहें साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करके अपने बोलने को प्रभावी बनाने का प्रयास तो जरूर करते हैं, लेकिन जब तक उसमें तथ्य सम्मिलित ना हो तब तक वो ऑडियंस के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे इंटेलेक्चुअल स्पेशीज जो इस अर्थ पर हैं वो हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और इसके लिए स्पेशली हम बात करते हैं जब हम कहते हैं कि सस्टेनेबल फ्यूचर, व्हाट वी आर गोइंग टू गिव टू द फ्यूचर जनरेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेके एक छोटे से इंसिडेंट को कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगी। एक बार किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता को भी बुलाया गया और बिना माता पिता या विद्यार्थियों को एक दूसरे को बताए माता पिता को एक सेट ऑफ कलर्स दिए गए और एक पेपर दिया गया कि वो उसमें कोई चित्र बनाएं। और जब माता पिता ने चित्र बना दिए तो जिस माता पिता ने जो सेट ऑफ कलर्स चूज़ किया था उसी का जो पूरा बचा हुआ भाग है वो उनके बच्चों को दे दिया गया। जब दोनों ने पूरे चित्र बना लिए तो उनको आमने सामने लाया गया। माता पिता ने बहुत उत्साह से जब अपने चित्र दिखाए तो वो बहुत रंगीन चित्र थे, बहुत खूबसूरत रंग उसमें थे। और जब उन्हीं के बच्चों ने अपने चित्र सामने दिखाए तो उन बच्चों के चेहरे बुझ गए अपने माता पिता के चित्र को देखते हुए और कंपेयर करते हुए अपने चित्रों से। और ये फिर सबने देखा, टीचर्स ने भी, बच्चों ने भी, पेरेंट्स ने भी। और पेरेंट्स को बहुत अफसोस हुआ कि सबसे अच्छे रंगों का इस्तेमाल तो हमने कर लिया, तो लाल, हरा, नीला, पीला रंग तो आपने इस्तेमाल कर दिया बहुत सुंदर चित्र बनाने के लिए, और जो रंग बचे तो वो काले, धूसर, मटमैले, ग्रे और इसी तरह के रंग बचे थे। तो इससे हम अंदाज़ा एक लगा सकते हैं कि हम आने वाले समय में अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कैसा क्लाइमेट, कैसा अर्थ जो है वो छोड़े चले जा रहे हैं। और यहाँ पर जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बीइंग द टीचर, द एजुकेशनिस्ट, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये क्या महत्वपूर्ण है कैसे धरती को बचाना और उसमें हमारा रोल क्या हो सकता है।
क्या हम नया क्रिएटिविटी के द्वारा ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है जो सोच सकता है। तो इसलिए डिबेट का जो विषय है वो आगे बढ़ाने को लेकर ये है कि जलवायु परिवर्तन के लिए यदि हम कहीं भी अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं तो हम इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने तर्क प्रस्तुत किए। बेटा, आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद और आप सबको धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. May I now request Mrs. Ira Chauhan to kindly address the gathering. Namaskar, Sanjeev ji, Tarun ji, audience, students, participants. It's been a wonderful debate. A lot of facts and statistics have been thrown at us, so I won't be delving into that, and I won't be lecturing you any further on that. The entire purpose of a debate is to make you think of a subject from diverse points of view. And that's why when preparing for a debate, one must, apart from planning one's own lines, think and preempt the points of the opposite sides. This just not gives you great counter arguments, but then it also opens doors and it changes your perspectives. You must be respectful and aware of others' points of views. It also helps you to explore the subject better. Like a famous saying by Allen Ginsberg, I don't think there is any truth. There are many points of view. And so in all spheres of life, we must remember that. As for today's debate, I'm pretty clear on which side of the fence I stand. But I don't want to appear like I'm taking sides, lest the contestants think I'm biased. So today, for the youngsters, I'm going to throw a few questions at you that you need to really think about. And I think that may bring us closer to saving this beautiful planet. Are we truly living a life in harmony with nature? If the planet was considered our parents' house, would we still run around felling trees, destroying their gardens, and constructing malls? Is technology and development more responsible, more essential than rivers and forests? Is nature completely immune to humans' actions, or does it really get affected by what we do? Which is the single most destructive species on this planet that has caused the extinction of millions of species? Why is the air quality around us depleting so fast? Is the day after Diwali especially bad since the weather is changing, or is it a result of the crackers we collectively lit up the previous night? Once you ponder over those questions, I'm sure you will have the answer to today's question. But more important than all of that, I want you to look more closely at what's going on in Uttarakhand and look at our own actions. It's great to have solid arguments to win debates, but what you need to examine closely is what is your contribution to this planet. Is it positive or is it negative? Finally, in the words of the American actor and environmentalist, Ed Begley Jr., when we destroy something created by man, we call it vandalism. When we destroy something created by nature, we call it progress. Thank you. Thank you so much, ma'am. May I now request Mr. Anjum Sharma to kindly share his word of wisdom, sir. I'll do.
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस डिबेट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। संजीव सर ने पिछले साल भी डिबेट ऑर्गेनाइज कराई थी, मैं वहाँ था। ये कहते हुए थोड़ा सा खराब लग रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा पार्टिसिपेंट्स का जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा कम दिखाई दिया, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी होता है। जंगल में दो तरह के जानवर होते हैं, एक होता है सांप, जो कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा आपको नहीं पता, आप उसको देख के हल्का सा पीछे हट जाते हैं। और दूसरा होता है शेर, आपको पता है कि वो आया है तो केवल शिकार करने आया है, और इतना धीमे धीमे चलेगा कि उसके पदचाप आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन आप उससे भय खाते हैं कि ये हमारा शिकार न कर ले। डिबेटर को शेर की तरह होना चाहिए, वो इतना धीरे धीरे चले कि आसपास के लोग या पार्टिसिपेंट्स उससे डरें और कहें कि शायद ये हमारा शिकार करेगा, और आपको उसके तर्कों का शिकार करना भी चाहिए, वही डिबेट होती भी है। पार्टिसिपेंट फर्स्ट आए, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं किस साइड खड़ा हूँ, एक निर्णायक मंडली में जितने लोग होते हैं उन्हें अपना मत बताने से बचना चाहिए। जैसा कि मुझसे पहले जो मैम आई उन्होंने कहा कि अन्यथा ये सोचा जाएगा कि आप बायस तो नहीं हैं, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं किस तरफ खड़ा हूँ या मेरा मत क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर मुझे लगता है बोलना ज़रूरी है ताकि आगे उन चीज़ों का ध्यान रहे। सबसे पहले तो लच्छेदार भाषा आपकी डिबेट को स्थापित नहीं कर सकती, बिना तर्कों के आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। आप डिबेट याद न करके आएँ, सबसे अच्छी चीज़ वो होती है, आप केवल पॉइंटर्स देख कर आएँ और उन पॉइंटर्स को यहाँ पर आके अपने हिसाब से खेलें कि आपसे पहले आए वक्ता ने क्या कहा था, और उसके तर्कों को काटते हुए आप अपने पॉइंट को कैसे फिट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से डिबेट करेंगे तो कभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, उच्चारण पर ध्यान दें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स थे। अगर आप हिंदी में हैं तो ये देखें कि अगर आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं हल्के से नुक्ते की वजह से उन शब्दों का अर्थ तो नहीं बदल जाता, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको नहीं लगता है कि हम नुक्ता नहीं लगा सकते तो नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए वहाँ पर। दूसरी चीज़, कविताओं का उपयोग वहीं करें जहाँ पर लगता है कि आपके तर्क को पुष्ट करेगी, वो तर्क नहीं बन सकती है, इसलिए कविताओं का उपयोग वहाँ पर न करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। आपने पर्सनली क्या अपने जीवन में देखा, अगर वो उदाहरण बन के आपके तर्क के साथ चल सकता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही तर्क बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सोचेंगे कि हम जीत रहे हैं, तो आपको उनको ये कभी नहीं महसूस करने देना चाहिए कि वो जीत रहे हैं। पार्टिसिपेंट फर्स्ट आए, बहुत अच्छे से अपने तर्कों को रखा। अच्छे से तर्कों को इसलिए रखा क्योंकि अगर आप इस पूरे विषय का अगर विरोध कर रहे हैं कि मानव निर्मित नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इसको साबित कर पाएं कि मानव निर्मित नहीं है। इसलिए पार्टिसिपेंट फर्स्ट के लिए एक बार आप तालियां ज़रूर बजाएं कि उन्होंने ये पूरी तरीके से साबित करने की कोशिश की कि वो नहीं है, और इसके लिए उन्होंने जोग्राफिकल एग्जाम्पल दिए, उन्होंने एंटायर सोलर सिस्टम के बारे में बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, नियोलिथिक पीरियड के बारे में बताया, ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो पपेट ऑफ दिस नेचर, इसको स्थापित करने की कोशिश की। रिबटल्स भी उतने ही अच्छे तरीके से दिए, कहीं भी अपने ही फंसाए जाल में वो खुद फंसती हुई नजर नहीं आ रही थी। एक डिबेटर को बहुत स्पष्टता होनी चाहिए कि वो किस स्टैंड पर खड़ा है। पार्टिसिपेंट 2 आती हैं, उन्होंने कहा सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल वार्मिंग में, और उन्होंने एक बात को बार बार बोलने की कोशिश की और स्थापित करने की कोशिश की कि नहीं भाई, आप जो कह रही हैं वो गलत है, सोसाइटी का रोल बहुत बड़ा होता है। लेकिन कहीं कहीं पर जब वो साइंस की बात कर रही थी तो वो कहीं ना कहीं टिल्ट दिखाई दे रही थी कि नहीं, ये मानव निर्मित तो है लेकिन साथ साथ ये प्राकृतिक भी है। आपको अपना स्टैंड बहुत क्लियर करने की जरूरत है वहां पर कि आप रिबटल में फंसे ना। पार्टिसिपेंट 3 आई, सबसे पहले तो अच्छी बात यह कि मैं एकमात्र पुरुष निर्णायक मंडल और इस पूरे इसमें मैं था, तो मुझे आज पहली बार लगा कि नहीं, हम लोगों की भी कमी हो सकती है। और ये बहुत अच्छा था कि चारों पार्टिसिपेंट महिला स्त्री थी और निर्णायक मंडल में भी थे, एक मैं और एक तरुण सर, हम 2 आपके बीच में हैं इस समय, बाकी लोग भी हैं, मैं इस डिबेट की बात कर रहा हूं। आप आधा समय बैकग्राउंडर में ना लें, आपको यहां पर आके सीधे अपने विषय को स्थापित करना है। आप आधा समय बैकग्राउंडर में ले ही नहीं सकते हैं कि मैं आ रही हूं, आज मैं ये बात कहूंगा, आज मैं ये करने जाऊंगा, मैं ये करने जाऊंगा, आप मेरे तर्कों से डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। उसके बाद भयभीत नहीं हुआ कोई और नहीं होता है। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो भयभीत आप नहीं कर सकते। आपको कहने की जरूरत नहीं है। शेर कहता नहीं है कि मैं डराने आ रहा हूं, आप उससे डरते हैं क्योंकि उसका नेचर वैसा है।
आपको शेर बनना है, कहना नहीं है, अपने तर्क से वहां पर ये साबित करना है। F4 आई हैं, उन्होंने तर्क नहीं थे, आर्गुमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने उत्तराखंड की धरती के बारे में और कुछ कुछ अपने अनुभवों को साझा किया। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि हिंदी स्पीकर्स अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, जो कि आमतौर पर होता है। उन्होंने बोलने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी जितने पार्टिसिपेंट्स थे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने पार्टिसिपेट किया, और फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी तो और अच्छा लग रहा था कि अलग अलग जगहों से आए हुए पार्टिसिपेंट्स थे। आप इस विषय को धुनिए मथिए, किसी विषय पर सोचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस विषय के हर शब्द को तोड़ें। अगर टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज मानव निर्मित है, जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित नहीं, एक प्राकृतिक घटना है, तो आप देखेंगे इसमें 6 शब्द आ रहे हैं। एक है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है मानव निर्मित, मानव ने क्या क्या निर्माण किया, मानव अलग शब्द है, निर्मित अलग शब्द है। फिर एक शब्द आ रहा है प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक अलग शब्द है, घटना अलग शब्द है। तो आप इन शब्दों के साथ खेलने की कोशिश करिए। इन शब्दों को जब आप तोड़ेंगे, डिबेट और उसके आंसर्स अपने आप आपके सामने निकलते चले आएंगे। तो सबसे जरूरी होता है कि आप शब्दों के साथ खेलना सीखिए। डिबेट तर्क और शब्दों का खेल है, इसीलिए इसको तर्कशास्त्र भी कहीं कहीं पर कहा जाता है कि ये तार्किक एक तरीके से अपने बात कहने का तरीका है। और कॉन्फिडेंस के साथ कहिए, आंख में आंख डालकर कहिए। पार्टिसिपेंट 2 को स्पेशली कहूँगा, आप बहुत अच्छा डिबेट कर रही थी, लेकिन आपकी जो पूरी नज़र थी वो पेड़ की तरफ थी और आसपास थी। आप आंख में आंख डालकर बात करेंगी, आप और ज़्यादा अपने तर्कों को साबित कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। Thank you so much, sir, for delving into the intricacies of the performances. For the audience, it's incumbent upon me to tell you that this was a month-long debate with 4 rounds, namely the preliminary, quarter-final, the semi-final, and eventually the rounds culminating into the final round today. We had students from various premier institutes participating. To name a few: Jamia Millia Islamia, Banaras Hindu University; Miranda House, Hansraj University of Delhi, along some other reputed colleges. May I now request Dr. Sanjeev Chopra to kindly present a token of gratitude to our chief guest, Mr. Tarun Vijay. Thank you so much, sir. I request you to kindly join us on stage, because we'll be having the valedictory ceremony right after this. May I now request Dr. Rajendra Dhawal to kindly present a token of gratitude to our jury 1, Mr. Anjum Sharma. Thank you so much, sir. May I now take the honor to invite Dr. Devendra Singh Man to present a token of gratitude to our jury 2, Dr. Reena Onyal Tiwari. Thank you so much, sir and ma'am. May I now request Dr. Onima Sharma to kindly present a token of gratitude to jury 3, Mrs. Ira Chauhan. Thank you so much, everyone. We are proceeding towards a valedictory ceremony. I request all the dignitaries to kindly join us on stage. May I request all the dignitaries to kindly join us on stage, please, for the valedictory ceremony. Yes, sir. Before we commence with the ceremony, let me introduce you all the participants, all the finalists who are present here.
Participant F1. Participant F1 spoke for the motion, the very first participant. She's Shreya Kumari from Patna Women's College, Bihar. Can we have a huge round of applause, please, for her? Participant F4 spoke against the motion in English was Maheen Faisal from Miranda House, University of Delhi. Participant F3 is Akarshika Pandey from IGNU Mau, Uttar Pradesh. And the last but not the least, participant F4, Akanksha Gupta from Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar, Punjab. I request the audience to be kindly magnanimous in your applauses. Now comes the most awaited moment, the moment we all have been waiting for the past 1.5 months, the moment of truth. I can see the nervousness and the excitement palpable in the air. So without any further ado, the fourth position has been bagged by Akarshika Pandey from IGNU Mau, Uttar Pradesh. I request the dignitaries to kindly give away the prizes. She gets a prize money of 11,000 rupees, a trophy, and a certificate. Can we have a huge round of applause for her? IGNU Mau. She's from IGNU Mau, Uttar Pradesh. The participant who's clinched the third position is Akanksha Gupta from Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar, Punjab. She gets a prize money of 11,000, a trophy, and a certificate. I request the dignitaries to kindly come forth and give away the prizes. Now, the most awaited moment. The first position, the champion of the VoW Mantrana National Debating Championship 2022. The first position has been bagged by Maheen Faisal from Miranda House, University of Delhi. Can we have a huge round of applause for her? She gets a prize money of 51,000, a trophy, and a certificate. I request the dignitaries to kindly come forth and give away the prizes. This implies that the second position has been bagged by Shreya Kumari from Patna Women's College, Bihar. Well, thank you so much, everyone. So now when the dust has settled and we've got a champion, it's important that we acknowledge all our participants right from the preliminary round who didn't win for sure, but put in their best of their efforts to present their stance with conviction. To end on an inspirational note, here are some lines. पर लगी सांस जब फूल ने तो तूफान ने मौका लपक लिया, आसमां की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया, पर झाड़ रही है धूल परों से, रगों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है, माथे पर चोट लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आंतें अटक गई, पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकड़ में घुटना, मिर्च सलीखे जलता है, माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे नथनों से तूफा लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे नथनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर रोज खड़ा हो जाऊंगा.
मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।